हेलो दोस्तों, आज हम ऑटोकैड की मदद से स्वास्तिक बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डायमेंशन देख लेते हैं जो कि 28, 36, 8, 44, 36। यहाँ हमने दो विंडो बना ली हैं ताकि हम एक पे काम कर सकें और दूसरे से हम ड्राइंग को देख सकें। हम स्टार्ट करेंगे लाइन कमांड से, जिसके लिए एल टाइप करेंगे, एंटर। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, माइनस के 4, एंटर। एट द रेट एट द रेट 28, 0 कमांड देते रहेंगे। 36, 27, 0, एंटर। एट द रेट 8, एंगल 0, एंटर। एट द रेट 4, एंगल, एट द रेट 36, एंगल 180 डिग्री, डबल। देखिए यहाँ पर हमने एक शेप बनाई है जो कि अधूरी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे कमांड को यूज़ करेंगे। के लिए क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट पोलर पूछ रहे हैं सेंटर पॉइंट क्या है, देंगे 0,0। और देखिए यहाँ पर हमारे पास आइटम 6 हो रहा है, तो इसको हम कर देंगे 4 एंड एंटर। क्लोज एरे। अब ये देखिए हमारे पास बन चुका है, तीन डायमेंशन है। अभी हम इसे 3D में कन्वर्ट करेंगे। साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। अब यहाँ पर हमारे पास ये व्यू भी दिखा रहा है और वो भी जो हमने अभी बनाया है। हम इसे फिर से लेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे प्रेस पुल, प्रेस पुल, और जो भी आप देना चाहें हम यहाँ पर हाइट देंगे इसकी 4 mm।
यहाँ से हम इसे जेपशन में बना देंगे। देखिए हमारा बनकर तैयार हो चुका है। डिस्प्ले परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस एनहांस्ड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।